are going to learn about the new topic, that is the Bernoulli's theorem. Okay. So before going to state about Bernoulli's theorem, which is most important for your examination point of view. So first of all, we will learn what do you mean by the principle of continuity. Okay. Then on the behalf of the principle of continuity, we will discuss about the Bernoulli's theorem, and lots of the application on the basis of the Bernoulli's theorem we will discuss. Okay. Now this is the principle of continuity. What do you mean by the principle of continuity? Okay. With the help of an example, first I will elaborate, then I will give the definition of this expression. Okay. This expression shows that, let us suppose that if we are having a pipe, let us suppose that if it is a pipe whose area of cross section is A1. Okay. Let us suppose that it is a pipe, metallic pipe, whose area of cross section is A1, to which another pipe is connected whose area of cross section is A2. Okay. From the diagram we can observe that here area A1 of the pipe is greater than the area A2. Okay. Let us suppose that some amount of liquid start to flow from this area of cross section of the pipe. Okay. If some amount of fluid starts to flow from this area of cross section of the pipe, since area of cross section is larger, then the speed of the liquid will be lesser. Okay. And from here, if the area is smaller, then the speed of the object will be larger. Okay. It means that if we multiply speed, means that is the length, and here that is the area. So area multiplied with length is known as volume. Okay. And here also for volume, it means that equation of quantity says that the rate of flow of liquid from an area of cross section A1 to the area of cross section A2 should be equal for equal interval of time. It means that if I am writing here A1 V1 is equals to A2 V2. What does it mean here? A1 is the area of cross section and V1 is the speed of the or velocity of the fluid. Okay. Whereas here similarly A2 is the area of cross section of this pipe and V2 is the velocity of the fluid passing from this area of cross section. So from here we can say that this is the volume of the fluid and this is also volume of the fluid for a particular duration of time. Then if any fluid follows same equation, okay, same equation for the particular duration of time, then we can say that the volume of the liquid flowing per unit time for an area of cross section should be equal for each and everywhere. अगर ऐसा कोई भी, if a fluid follows the same equation A1 V1 is equals to A2 V2, then we can say that this is the equation of continuity. Is it clear? Is it clear to everyone? No, not clear. Let us suppose that we are having the two pipes. Okay, this is the pipe first and this is pipe second. Okay, from the diagram we can observe that here the first pipe is having the area of cross section larger as A1. Okay, and the second pipe who is having the area of cross section is lesser. Okay, A2. So from diagram we can say that A1 is greater than A2. If for a particular duration of time, let us suppose that time is equals to 5 seconds. Okay, we have to calculate how much amount of fluid can be filled in these two vessels with the help of these two areas of cross section. Okay, now let's start the flow of liquid from this area of cross section. अगर हम time 5 second लेते हैं, let's suppose if time is 5 second, here area of cross section will be larger, so the speed of the volume which will eject from here will be less. मान लेते हैं जो भी amount liquid filled हुआ है. Okay, let us suppose whatever be the amount of liquid is filled here, that will be volume. Okay, if we multiply area and multiply, that is the speed of the liquid flowing from this area of cross section, then we will get the volume of the liquid filled in this container. Am I right? Is it? ऐसा ही होगा? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझते हैं. Let us suppose if we are having two pipes, या फिर दो हमारे पास नल है. ठीक, एक के पास जो पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है वो ज्यादा है, मोटा है. ठीक है, और एक का एरिया क्रॉस सेक्शन पतला है. ठीक है,
2 पाइप हो गए। अब एक को 5 सेकेंड के लिए हमने किया। आप टंकी में भी देखते होंगे कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आता है, हाँ, बहुत ज़्यादा जो उसकी फ्लो होती है वो ज़्यादा मोटा रहता है पाइप से, हाँ। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक। वेयर एज अगर इसी नोजल को हमने छोटा कर दिया तो प्रेशर हो जाता है। आप खुद भी बाइक स्कूटी धुलते होंगे तो देखते होंगे जब आपकी जो रबर की पाइप होती है आप उस पर अपना हैंड थंब नहीं लगाते हैं तो पानी की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मली फ्लो में गिरता रहता है। लेकिन जैसे उसके आप एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ योर थंब, then at that time if the area cross section will be less then the speed of the liquid flowing will be more, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो if area multiplied with the speed of the liquid flowing and here also area multiplied with the speed of liquid flow, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पर स्पीड कम है तो एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा है। तो for similar interval of time the amount of the liquid filled in this container will be same होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। Yes, sir. अब ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो घर पे भी आप जाके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास अपने घड़ी में 5 मिनट का समय ले लीजिएगा और जिस पाइप से आप स्कूटी अपनी धुलते वॉश करते हैं आप क्या करिएगा कि उसी से 5 मिनट के लिए बिना अपने उंगली को रखे हुए, ठीक है, और पाइप ऐसे खोल दीजिएगा, टैप ऑन कर दीजिएगा, पानी जितना बकेट में फिल्ड होगा उसे देख लीजिएगा, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरा बकेट रख लीजिए, अब वहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन को कम कर दीजिए, फिर 5 मिनट लीजिए और फिर देखिए पानी कितना फिल्ड होता है। तो आप पाएंगे कि दोनों टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम इज लिक्विड फिल्ड इन बोथ ऑफ द बकेट्स। क्यों? क्योंकि एक बार जब क्या होगा, आप देखेंगे एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी पानी गिरेगा, लेकिन वो क्या होगा, उसका एरिया कम होगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है, ठीक। अगर ऐसा होता है कि A1 V1 A2 V2 मीन यहाँ पे जो हमें लिक्विड का वॉल्यूम मिला है, अगर ये जो वॉल्यूम मिला है और ये वॉल्यूम मिला है, ठीक, ये वॉल्यूम 1 इन फर्स्ट कंटेनर एंड वॉल्यूम 2 इन सेकंड कंटेनर, अगर ये दोनों बहुत बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक। और ऐसा नहीं मिलता तो हम कह देंगे दिस नॉट फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है हम if we are this equation of continuity means that something which is continuous for each and every point, ठीक। if you are coming yesterday, today, tomorrow and the day after tomorrow you will present inside of this premises, then we can say that you are a continuous student or a regular student for this school, okay। आप आज या आज के बाद 4 दिन बाद आइए, फिर 10 दिन बाद आइए, फिर 20 दिन बाद आइए, फिर सीधे एग्जाम देने आइए, तो we can't say that that is a continuity, okay। if any fluid which follows the equation of continuity is said to be the continuous fluid, and so from here we can say that here the volume which may eject from a pipe from area cross section A1 and area cross section A2 should follow A1 V1 is equals to A2 V2, okay। so on the behalf of this principle of equation of continuity, now we are going to discuss about the Bernoulli's theorem, okay। we will just So what Bernoulli's theorem states? Anyone having any idea about the statement of Bernoulli's theorem? Arshia, yes, please stand and speak about the statement of the Bernoulli's theorem. Sir, it follows law of conservation of energy for fluids. Okay. And else? Aditi. Aditi. Smriti. Yes. Don't know. Swastika. An ideal liquid, that is a liquid which is incompressible and not viscous in nature. It goes from one point to another and with a total energy, that is the potential energy and kinetic energy of the liquid is constant, that is total energy is constant, then it is one theorem is another part of this theorem. Sit down. Anyone else a part of this? Bernoulli's theorem states that, listen carefully, this theorem states that, here I am going to write the statement, when an incompressible
and non-viscous fluid, whether it is liquid or gas. So what I have written here, when an incompressible and non-viscous fluid moves from one point to another point, then all the energies that is potential energy, kinetic energy and pressure energy will be constant at every point of the path. And what is the necessary condition? The necessary condition is that the fluid should flow in streamlined motion. Okay. So what does it mean and what we can conclude from this statement? Listen carefully. What we can write: if an incompressible and non-viscous fluid moves in a straight line path, from one point to the another point, then all the energies, that is potential energy, at rest potential energy will be there, kinetic energy and pressure energy, means energy due to the create of pressure, okay, that should be constant at each and every point of its path. It means that P means pressure energy plus half rho V square, that is the kinetic energy, okay, plus rho GH, that is the potential energy, it should be constant. If we can obtain such type of the expression for each and every point of the path of flow of a liquid, when the nature of the liquid is streamlined, then we can say that it follows the Bernoulli's theorem. Okay. Again, I am going to recite what I have written here. When an incompressible and non-viscous, incompressible means that No change in mode. okay, and non-viscous, it means that a drag force, a viscous drag force is not acting between the two layers of a liquid. Okay. So if an incompressible and non-viscous fluid flowing in a straight line motion or a streamlined flow from one point to the another point, okay, then the sum of all the energies like potential energy, kinetic energy and pressure energy should be constant throughout the journey. Okay, if we found that P is equals to P plus half rho V square plus rho GH, this is pressure energy per unit of volume, this is kinetic energy and this is potential energy. If the sum of all the energies is constant throughout the journey, then we can say that it follows the Bernoulli's principle. So with the help of an expression, we are going to deduce its expression. Okay. So let's start. अब सभी पहले देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा बड़ा है. प्लीज सी हियर, बेटा देख लो. सबसे पहले हम एकदम बेसिक चीज जो समझा रहे हैं, द थिंग विच आई एम गोइंग टू गिव यू एज आइडिया, इट शुड बी जस्ट स्टिक इनटू योर माइंड. अपने दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो उसी तरीके से डेरिवेशन करने में आपको एग्जाम में भी फायदा होगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट आर एम फॉर दिस डेरिवेशन, दैट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव
to move a fluid from one place to the another place. जब हम क्या करते हैं, whenever we are open the tap, at that time liquid is flowing from one point to the another point. So in motion from one point to the another point, there is some work is done. So first we have to calculate some amount of work done. Okay, and as a body is moving, okay, so work is done. So here we have to calculate first force and displacement. Okay, area लिख दिया हमने, displacement को हमने x से लिख दिया. Is it clear? So first we will calculate, our aim is to calculate work done. Then we will calculate when a body is in motion, so it will have some amount of kinetic energy, and as it will move on and move on and move on, so it will have some increase in kinetic energy, and as the body moves in a kinetic energy, if a body moves, so there is an increase in kinetic energy takes place, so there will be decrease in potential energy takes place. Okay, and as we are knowing that net energy is also known as mechanical energy, so if we calculate at last net energy, okay, that is the what, sum of the kinetic energy and potential energy. If we calculate these two, okay, and if it should be equal to this work done, then we can say that this is the expression of the Bernoulli's theorem. सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, work done, फिर increase in kinetic energy, then we will calculate decrease in potential energy, फिर इन दोनों को सम करेंगे और इसके इक्वल करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा, और अगर वो दोनों LHS और RHS बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि that is the expression for the Bernoulli's theorem. Is it clear? करना कैसे, चलना कैसे है, अब करना शुरू करते हैं. देखिए करना कैसे, इसे इरेज कर दें. चलो ठीक है, रहने देते हैं. Let us suppose that this is a pipe. अगर इसे इरेज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है. Listen. Let us suppose that this is a pipe. This is X terminal, this is Y terminal, and this is the earth surface. Okay. Let us suppose this is the point. This is the point P and this is the point Q. Okay. What we are going to do? We are going to derive an expression for the Bernoulli's theorem. That our aim is to derive P plus half rho V square plus rho Gx if it should be constant for each and every point of the journey. Okay. So first we have considered a pipe whose area of cross section at terminal X is A1. Okay. And the pressure at this point is P1. Okay. At X area is A1 and pressure is P1. And at point B and here the velocity of the liquid flow is V1. Okay. At terminal Y, if the speed of the fluid is V2, area of cross section is A2 and pressure is P2. So what I have considered? Let us consider a tube whose area of cross section at X terminal is A1, speed of fluid is V1 and pressure is P1. Okay. Similarly, at terminal Y, what area is A2, speed is, that velocity is V2 and pressure is P2. So as I have written there, first we have to calculate the work done. So first we will calculate, for calculation of work done,
we have to calculate two things, force and displacement. If we calculate force and displacement, then we can easily calculate burden. So first we have to calculate how much distance is covered by the liquid when it is flowing per unit of time. So here I am writing distance covered by fluid in per unit of time, So for terminal A, at terminal A, so it will be speed is equals to distance upon time. यहाँ से देख लीजिए पहले, speed is equals to distance upon time. Here at terminal X, speed is v1. Let's suppose distance is d. Upon time per unit of time, so time is 1 second. So distance is equals to v1. Similarly, we can write at terminal Y, d is equals to v2. Anyone having any doubt? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now we are having the distance covered by the fluid at terminal A, that terminal X, and terminal Y. Okay. Now we have to calculate burden. So how much amount of force is acting at terminal X and terminal Y? So force at terminal X is given by F1. F1 is equals to P1 into A1. Is it clear to everyone? Yes, sir. Force acting at terminal X is P1 into A1. Pressure is equals to force per unit area. So from here we can write force is equals to pressure into area. Okay. And similarly we can write at2, that is P2 into A2. Okay. So if we are having the displacement for both the terminals, if we are having the force at both the terminals, we can easily calculate the burden. So burden at terminal X is W1 is equals to force is P1 A1 into V1. Okay. And burden at terminal Y is, that is P2 A2 and V2, where V1 and V2 are the velocities of the liquid flowing from X1 and X and Y terminals. Is it clear? सभी को दिख रहा है? Yes. दूसरा सी ईयर इधर देखो, ठीक है? So now we can see that when a fluid is flowing from one terminal to the another terminal, so there is change in the burden. Okay? So net burden कितना हो जाएगा? Net burden is equals to W1 minus W2. Okay? So it will be P1 A1 V1 minus P2 A2 V2. Okay? Is it clear to everyone? Yes, sir. And as we are knowing that, let us suppose this is equation number 1. From equation of continuity, A1 V1 is equals to A2 V2, and also we are knowing that, sir, A1 V1 already you have told that A1 V1 is nothing but that is the वॉल्यूम. ओके, लिख सकते हैं. अगर आपको वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं. Yes, sir. Because here a similar fluid is flowing from this terminal to this terminal. Is it clear? सभी को क्लियर है? जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से वो सेम है, तो डेंसिटी भी सेम होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसे हम ये लिख सकते हैं क्या? रो बाई एम लिख सकते हैं, सॉरी एम बाई रो. If we put this value into equation number 1, then delta W net burden is equals to, if A1 A2 is equals to V1 V2, then we can write P1 minus P2 into M by rho. Equation number 2. Now is it clear to everyone or not? ये कैसे आया है? ठीक है,
क्या तो सभी को क्लियर है? Yes. Now till here we have calculated our first aim, that we have to calculate the burden. Burden calculate हो गया. Now we are proceeding towards the next thing, that increase in the kinetic energy. क्या लिखना चाहते हैं? So now we have to calculate, our second aim is to calculate the increase in kinetic energy. As we are knowing that as the particle goes on and on and on, so it will have some increase in energy or kinetic energy. So at terminal A or that terminal at terminal X, kinetic energy, okay, kinetic energy at terminal X will be what? Half mv square. We can write half m, and here speed is v1, so half m v1 square. Is it clear? At terminal Y it will be half m v2 square. And as I have said that as a particle will move on and on, so it will have some increase in the speed. Okay, so from here we can calculate that change in kinetic energy or increase in kinetic energy. This is nothing but that is a increase in kinetic energy can be written as that kinetic energy at Y minus kinetic energy at terminal X. Okay, so kinetic energy at Y is equal to half, if we take the common half and m, so v2 square minus v1 square. मिल गया? लिख सकते हैं? Yes. So till now we have calculated our second aim. Kinetic energy भी मिल गया? Clear सभी को? Yes. Let us suppose this is equation number 3. इसीलिए कहा था थोड़ा बड़ा है. ठीक? Now we are proceeding towards the third aim, that is decrease in potential energy. So decrease in potential energy. So first we will calculate that the potential energy at terminal X is equals to mg, and let us suppose that the height of this point from the surface is h1 and this is h2. Okay, so it will be mg h1, and at terminal Y it is mg h2. Can we write it? So change in potential energy will be mg h1 minus, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कर दें. अब इन दोनों को हम सम कर लें. As we are knowing that due to the law of conservation of energy states that the decrease, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं law of conservation of energy states that energy is conserved throughout the journey. It means that decrease in potential energy should be equals to the increase in kinetic energy. और मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर देना होता है. सो टोटल एनर्जी इधर से निकाल लेते हैं. सो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस, ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लेंगे, mg h1 minus h2. Is it clear to everyone? Yes, sir. एकदम मंजिल तक पहुंच चुके हैं. Now अब हमें एकदम अच्छी आगे भी है क्या? अभी आगे भी है. ठीक है. Now अब इसे इक्वेट तो करेंगे ना. Now at this time we have, अभी हमने क्या किया? स्वेटर पहन लिया, शर्ट पहन लिया, शूज पहन लिया, जींस पहन लिया, सब कुछ पहन के एकदम रेडी है. नाउ टचअप क्या करना? बस बाल झाड़ना और चल देना है. ठीक. अब बाल झाड़ा नहीं और ऐसे चल देंगे तो सामने वाले कहेंगे अरे दाग रसोई थी, कपड़ा पहन के चलिए. ठीक. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू इक्वलाइज water should be equals to the amount of energy dissipated. So now let's start. अब आप बताएंगे हमें, क्योंकि हमने सब कुछ इरेज कर दिया आपसे. So what is the amount of burden? Net work done
should be equals to the change in energy. And here we have calculated that net burden is equals to P1 minus P2 m by rho is equals to half m V2 square minus V1 square minus mg h1 minus h2. Is it clear? This expression is clear to everyone? अभी यहाँ से हम इस रो को क्या कर दें, इधर मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी, और m से m कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square. हो गया. अब इसको हम और थोड़ा सा यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं. हाफ रो V2 square minus हाफ रो V1 square, ओके, माइनस रो G H1 प्लस रो G H2. This step is clear to everyone? Yes. अदिति, क्लियर है? कहाँ पे देखा था? ये क्लियर है? P1 minus P2 m upon rho कैसे आया वहाँ से? m upon rho कैसे आया? ये यहाँ पे अभी हमने बताया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी एंड वी आर नोइंग दैट a1 v1 is equals to a2 v2. Area into length is volume. Area into length is volume. ठीक है. ये वेलोसिटी है ना, हमने बोला फॉर पर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम इज 1 सेकंड एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ टाइम इज 1 सेकंड देन द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस. हो जाएगा. तो एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम. और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एज वी आर नोइंग दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मास पर डेंसिटी. नाउ क्लियर? अब ठीक है, यहां तक लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ फ्रॉम हियर ओनली ट्रांसपोजिशन यू हैव टू गिव राइट. P1 विल बी हियर, सो जिसके साथ आपके साथ सफिक्स लगा हुआ होगा 1 वाला, वो LHS में आ जाएगा. इट इज नेगेटिव, सो इट्स व्हेन इट विल बिकम पॉजिटिव हाफ रो V1 स्क्वायर in general we can write that pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant for, अगर हमने कंसीडर कर लिया है कि दो पॉइंट पे अगर वो सिमिलर है तो फॉर द फर्दर जर्नी इट विल बी आल्सो सिमिलर. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बर्नौलीज थ्योरम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगेन आई एम समराइजिंग दिस स्टेटमेंट फॉर द थ्योरम that the sum of all the energies when an incompressible and non-viscous fluid is moving in a streamlined motion, then the sum of all the energies, pressure energy, kinetic energy and potential energy should be constant for each and every point of the path. Okay, this is the theorem of Bernoulli's. clear है? अभी कोई क्या है सर, ये तो आपने बताया कि when the pipe is kept at a height h1 and h2, किसी हाइट पे रखा था, ठीक. यहाँ पे आपने हाइट बता दी कि पाइप किसी हाइट पे रखा था. लेट अस सपोज दैट पाइप यहाँ पे रखा था जमीन से, ठीक. तो ये क्या देखिए सर, इफ वी पुट दैट पाइप ऑनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इफ h becomes 0 so potential energy becomes 0. तो कभी कभी आपके एग्जाम में घुमा के कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि एट सरफेस, यहाँ पे इरेज कर देते हम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि if a pipe, if a tube or pipe, if a tube or pipe is kept at earth's surface, then what will be the expression for Bernoulli theorem?
तो आप लिख सकते हैं कि एट, आंसर देख लीजिए, एट और सरफेस H becomes 0, so potential energy becomes 0, and according to the Bernoulli theorem, the sum of pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is 0. Then this will be the expression for the Bernoulli theorem when a tube or pipe is kept at the surface of earth. क्लियर है सभी को? अगर एग्जाम में मैंने पहले वाला एक्सप्रेशन दे दिया, तो आप आई थिंक ये भी कर ले जाओगे, और अगर ये आ गए तो हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो बचपन में बहुत सारे आपने स्लोगन सुनेंगे अपने मम्मी पापा से, ये भी सुनागा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो जो यहाँ पे भी जग रहा है वो कुछ पा रहा है, और जो घर पे पक्का सोएगा। पहले ये वीडियो मिल जाए। देखिए वीडियो से क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन के डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी आपने पूछा ना कि सर ये कैसे m by रो कैसे आया, घर बैठे तो आप पूछ नहीं पाते। हो सकता है आप हमें मैसेज करते, हम देखते सोचते थोड़ा बिजी है, बाद में रिप्लाई कर देंगे, और बात ही हो जाता है। और यहाँ पे आप एट अ टाइम पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे भी इन्होंने पूछा कि सर हियर इट इज वेलोसिटी, देन हाउ यू कैन termed as the length. Okay, so for polyid of time. So this was the expression for the Bernoulli theorem. Is it clear to everyone? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. So shall we proceed for the next topic? Yes, sir. We are going to discuss about the new topic, that is the venturimeter. So venturimeter, some of the and atomizer, these are the devices which are using the principle of Bernoulli. Okay, it means that for these all the applications we are using the Bernoulli theorem. So now we are going to discuss about the new topic, that is the application of Bernoulli theorem in which there are several topics given inside of your book. The first one was, that is a venturimeter. The next was atomizer. Then देखो, लिसन, अब ध्यान से सुनिएगा इधर। There are few applications of this Bernoulli theorem I have illustrated here, that the venturimeter, this device is used to calculate the rate of flow of liquid from a tube. If we have to calculate how much volume is coming out for per unit of time from a pipe, then we can use venturimeter. Okay, अब venturimeter से कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। Atomizer, and sometimes you can see also when there is a huge wind or storm, at that time the tin which is placed onto the roof, कभी कभी आप देखते हैं कि जो टीन होता है वो उड़ जाता है। Why? क्योंकि जो लोअर जो प्रेशर होता है, पहले जो आपको पता होगा कि चेंज इन प्रेशर इज नोन एज, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, रो GH पढ़ते हैं। ठीक, if there is any change in pressure takes place, there will be also takes place the displacement of the object होगा। ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा कि sometimes you have also realized that in helicopters, when helicopter is just moving for its projection, it start to move, that its bottom or that the back end is start to lift first.
हेलीकॉप्टर में ये होता है ना, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर बना होता है, ये ऐसे हेलीकॉप्टर है और इसके पीछे का टर्मिनल है और ये ऐसे है। अर्शिया बोलेगी तो मेरा चॉपर है, ठीक है। अब देखो ठीक, और इसमें स्मृति बैठी है बर्थडे गर्ल, ले जाओ मेरा चॉपर और घूम लो। देखो हवा बाहर चल रहा है और बाल अंदर उड़ रहा है। लिसन, अब सारे लोग देखिए। सो आप देखते भी होंगे कि whenever a helicopter start to move, at that time its back end is lifting first, then its front end. ऐसे उल्टा देखा होगा, why? Because सबसे पहली बात क्या होता है, इसका जो बैक एंड होता है it is made very lighter, और जब लाइटर होगा तो जो भी प्रेशर लगेगा एयर का प्रेशर, ओके, वो प्रेशर क्या होगा, एरिया कम होगा। as we are knowing that pressure is equal to force acting per area, okay, so force will be pressure into area. If the area will be lesser, then the force will be larger. So here the force will be larger, so here a huge amount of force will act to lift the back portion, and here a huge, and here the less amount of the pressure will be act होगा। इसीलिए पहले पीछे से उठता है, और change in pressure will cause the change in the position of the object, ठीक है। तो इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये क्या करते हैं, इसका भी हम डिस्कशन करते हैं। सेम टीन में भी होता है कि whenever a roof is packed with the tin and if there is a huge storm is coming out, at that time sometimes the tins जैसे जो लगा होता है उड़ जाता है, या फिर आपकी जो टंकी का ढक्कन तो वो भी उड़ जाता है। तो जो लोअर प्रेशर होता है और जो अपर प्रेशर होता है, there is a sometimes it becomes a difference in between the upper layer of the pressure and lower of the layer of the pressure, and due to the change in the pressure it causes some change in the displacement of position, okay. These all are the examples, daily life examples of the Bernoulli's theorem on the basis of the change in pressure, okay. So now what do you mean by Venturi meter and how we can give its expression to calculate the velocity with which a liquid is ejecting from a tube, okay. So now we are going to start. So what do you mean by Venturi meter and how we can give its construction and working? Venturi meter is a device which is used to calculate the rate of flow of liquid from a tube, okay. So here I am writing, it is a device which is used to calculate rate of flow of liquid from a tube. It means that rate of flow of liquid means that is volume of the liquid coming from point of time. कितना पानी किसी भी ट्यूब से बाहर आ रहा है उसे निकालने के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। क्यू क्या है, ये क्या है, अभी क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कितना पानी बाहर आया, तो किस चीज का ये वॉल्यूम होगा ना, अभी पढ़ा है A1 V1, ये एरिया इनटू स्पीड इज नोन एज Q, ठीक है। पर यूनिट ऑफ टाइम, अगर टाइम t को अगर हम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। Q भी वॉल्यूम, V भी वॉल्यूम, A1 V1 upon T, okay. When T is taken as 1, then it will be clear. The amount of liquid flowing per unit of time is known as rate of flow of liquid in per unit, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कैसे। So let us suppose if we are having a pipe, again if we are having a pipe whose one terminal is wider, okay. So here the area of cross section is A1, okay, and now to which another pipe is connected which is very narrower,
आपने सैंड कैसल भी देखा होगा, ऐसे बना हुआ होता है, रख देते इधर, कुछ भी आगे डालते वो गिर किधर आ जाता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट दिस टर्मिनल इज वेरी नैरोअर, ओके। So if the area of cross section at this terminal is A1 and here the area of cross section at this terminal is A2. Let us suppose that there are the two openings at A1 and A2, okay, and which is connected with a very narrower tube which is also called capillary tube. आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पीपीट आपको at the time of titration there will be a glass rod you will get. glass rod तो solid होता है जिससे कि आप किसी भी चीज को सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, ठीक है। एक ग्लास रॉड मिलेगा जो कि हॉलो होगा, एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन यू विल सक सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द एनी वेसल। अभी भी जो आप यूज करते हैं, जो शीशे के फ्लास्क यूज करते हैं, कुछ अच्छा हम जिससे पूछेंगे वो बताना जरा, ये इसे क्या कहते हैं? कॉनिकल ग्लास। कौन सा बीकर यूज करते हैं? ग्लास बीकर, हमको ही पता है, तीन का थोड़ी है। In general we are using बोरोसिल बीकर because याद रखना और पता भी होना चाहिए बोरोसिल का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इसका थर्मल रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप देखते भी होंगे whenever at the time of boiling, okay, if you are having some amount of the mixture or any salt and you are just boiling some amount of H2SO4 and if you start to heat it तो कुछ समय तक ये क्या होता है, बॉयल होता है, ये फूटता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो फूट जाएगा। तो वो जो होता है जो हम लेते हैं, हाँ, टेस्ट ट्यूब या फिर और कौन सा होता है टेस्ट ट्यूब है? दो होता है, एक पतला सा होता है, एक मोटा सा होता है। बताओ क्या नाम होता है? एक पतला सा से होता है और एक थोड़ा सा मोटा सा होता है। दोनों टेस्ट ट्यूब ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, पूछना ये सारी। सबसे पहली बात, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ द apparatus or devices is used inside of a lab. It should be known by you because this academic session will be, it might be possible after 12 your academic session will be over, but after 12 you have to go for the professional education. और आपको पता होना चाहिए ना, छोटी छोटी a bit of the small thing, अब जरा बंद करो, a bit of the smaller things will enhance your